it's okay, perfect, nice. ठीक है. So uh we'll do some Jenkins more CI/CD research. Let's just call it DevOps research आज अभी के लिए. So we have routed all our Cloudflare tunnel traffic into our Nginx backend, and that will distribute all the inputs um, into the proper outputs. And also we have SSL using Google's certificate, which are provided by default by Cloudflare, the Cloudflare website. Wait, better. Okay, focus on better. Okay, perfect. तो इसको properties आते हैं. So let's just call it not Jenkins. Let's call it DevOps research. ठीक है. I'll go to my सोचता हूँ कितना संता कैसे कहूँ. हाँ, yes. रुक जा. Yes. मेरे को खुद zen से आना चाहिए था. रुक जा. I'll also come from the other browser window. Uh, अच्छा इसमें क्रोमा की नहीं है. रुक जा डाल दूँ. पहले मेरे को पिन कर ले एंड देन यू कैन रिसाइज जस्ट मी. या फिर तू दोनों को गूगल मीट से उठाना चाह रहा है. अच्छा. एक सेकंड. एक सेकंड. आई एम एडिंग यू है ना अभी. ऑल्ट करके Hmm. आई हैव एडेड यू इन. अब आई विल अप्लाई क्रोमा की ऑन माय कैमरा. Hmm. Do that. Then browser, portrait. Let's make it portrait. Let's add studio lighting.
बैकग्राउंड में I'll add बैकग्राउंड आई थिंक हो गया होगा. हाँ हो गया. Let me परफेक्ट. just, हाँ, let me just थोड़ा सा squeeze both of us. This is done. Filters, add chroma key. Okay, yeah, this is done. Close. Yeah, this is done. एक बार मेरी stream खोल के देखना. सेकंड. I'll also do that and अपनी देख रहा stream हूँ. पे I'll have to change the uh, content ये सब line. मैं भी change कर रहा हूँ. इसका लाइव में @ डाल देते ना यहाँ पे. अच्छा अरे भाई अभी तक स्पेलिंग गलत थी. एवर डे की जगह एवरी डे कर दिया मैंने. मेरे वाले stream पे तो बढ़िया है दोनों. हाँ बता SID. S166HARTH. अच्छा Standard. S166 I'll send HAR. it. Wait. आ गया. नहीं नहीं आ गया आ गया आ गया. आ गया ना. हाँ. हाँ और देखो सुनो. ये दिख रहा है. हाउ अबाउट वी रिकॉर्ड योर फर्स्ट वीडियो और माय सेकंड वीडियो तेरे को जैसा करना है. मैं वेयर यू समझा नहीं. first video for your channel or second video for my channel where um, you teach me the DevOps for my thing. You can title it something like teaching my normie front end friend DevOps, something like that. What's as in what do you want to learn? देख, I'll tell you what I have अभी. ठीक है. मेरे निक्स सर्वर पे वेट तेरे को हम्म, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी ना. नहीं एक सेकंड में देख भी नहीं रहा हूँ. मैं अपना ये चेंज कर रहा हूँ. टाइटल. टाइटल. हाँ ठीक है. TCP UDP. What else we are doing today? मेरे को भी uh, टैग कर दियो @morphohub. हाँ हाँ I will. हाँ. HTTP etc with what is it called? हाँ बताना. @ MorphoHub. MorphoHub. there is a very bad lag on my like YouTube studio. I don't know हाँ. why. दैट इज द अपलोड स्पीड लैग ना. अपलोड स्पीड तेरा वो हो रहा होगा क्योंकि तू गूगल मीट पे अपनी वीडियो अपलोड कर रहा है एंड देन यू अपलोडिंग द होल स्ट्रीम देयर. ओह साइलेंटली कैल्विन इज ऑन द स्ट्रीम. हेलो साइलेंटली. ओके. तो I have tagged you. अच्छा नाइस. यू हैव टैग्ड मी Done आई now? हैव टैग्ड यू. ठीक है. सो व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज देख किसी के भी चैनल पे Dude, डले. अच्छा. एक second, wait. अच्छा. I'll do a few things because ये मेरा RAM crash हो रहा है. ये वो हाँ वाला lag है. तेरे को वो वाला लैग भी आ रहा है. हाँ. So what can I close? It's fine जो भी चल रहा है. Let me see the bit of output once. Available 1.38 and what can I close? OBS I can't, Firefox I can't. Firefox isolated, ये वो talk quit. It's fine, manageable. Let's see. Closing a few हाँ. tabs here and there will work. Deep dive in caching. Okay, what I was doing is like you can see the stream ka handy. I was just going through Hussein Nasir's course and just doing things. हाँ. Yeah, I installed something. Check this out. Wireshark, but for terminal. हाँ नाइस. Mm. Okay, I have joined the Google Meet from two places. Maybe that is also. No, it is फिर not से two बताइए तेरा places. चैनल का क्या था S1. 66HARTH. What do you wanna do? Do you wanna do a like
term tools and stuff. हाँ, so I'll tell you, ठीक है। um, Mm, what I have is कि इंटरनेट पे जो मैंने डोमेन ली हुई है, ठीक है। mm, डोमेन पे जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है, इट गोज टू द क्लाउडफ्लेयर डीएनएस। क्लाउडफ्लेयर डीएनएस से mm. क्लाउडफ्लेयर टनल पे रिक्वेस्ट जाती है अभी सारी, ठीक है। Can you share your screen on आई Google Meet कैन as well? आई कैन वो तो देख लियो कि Do it. वो पिन विन का देख लियो, ठीक है। आई एम वार्निंग यू पहले, क्योंकि मेरे को भी करना पड़ेगा वो पिनविन पिन। गया 2 मिनट, गया 2 मिनट के लिए पिनविन छोड़ो, करो आप। अच्छा चलो ठीक है, लेट्स डू दैट फिर। ओके, Pin won't be required now when I am on Google Meet only. आई एम अनपिनिंग माय स्क्रीन, आई एम पिनिंग यू बैक। हाँ ठीक है, ठीक है। सो तेको तेको दिख रहा है ना, Mm, इंटरनेट से रिक्वेस्ट आएगी, डीएनएस पे जाएगी। mm, डीएनएस से मैंने टनल होस्ट कर रखा है, टनल पे जाएगी। ऑल रिक्वेस्ट mm, गो टू द 80 पोर्ट अभी, ठीक है। 80 पोर्ट पे mm, एनजिन कर रहा है, एनजिन कर रहा है लिसन, ठीक है। एंड देन mm, बेस्ड ऑन द सब डोमेन इट इज राउटिंग, ठीक है। अब अभी करंटली इफ आई mm, लुक एट द थिंग, तो दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन अभी, ठीक है। mm. What the next thing I want to do is this, ठीक है। CI/CD Okay. और let's just call it the DevOps pipeline, ठीक है, ठीक है। Mm. इसको ठीक से लगा देते हैं, So let's you just just call it। want कि मतलब you wait, you just want कि your website should be updated every time you do a push. That's it, right? नहीं, अभी नहीं, अभी I'm researching what all DevOps does and then I'll choose what to implement, ठीक है। Okay. एंड आई वांट टू डू इट ऑल फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें फ्रॉम स्क्रैच कर दी है इम्प्लीमेंट, ठीक है। Okay. ठीक है, आई तू मेरे को बस बता दे क्या क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली लाइक तेरी कंपनी में क्या होता है, ठीक है। और रुक जा, ओके। Yeah. एक वी विल पहली चीज रुको, पहली चीज never mention my company on stream. Okay. First and foremost, never do एक that. एक Okay. नॉर्मल साइज कंपनी में क्या होता है, ठीक है। लेट्स डू दैट, ठीक है, Okay. Let's do that. ठीक है। Okay, so how it goes is, रुक okay, जा, it's a normal size वी company. विल रिकॉर्ड दिस, वी विल रिकॉर्ड दिस, ठीक है। पहले विल अच्छा, प्लान। okay, then put a marker maybe. हाँ रुक जा, पहले विल प्लान एवरीथिंग, ठीक है। आई एम ओपनिंग माई क्लॉड है, Hmm. ठीक है। वी विल यूज Hmm. इट एंड प्लान द होल थिंग, ठीक है। You didn't get me my GitHub or Perplexity or anything, no? नहीं भाई, उसने बेचना ही बंद कर दिया यार। Stream पे मत बोलो, ठीक है? भाई मतलब यार, ठीक है जो भी है, अब बेचना बंद कर दिया तो इट्स लाइक नथिंग। हाँ ठीक है। आई वांट टू रिकॉर्ड अ वीडियो, वीडियो ऑन। इस एक तो पहले इसको सारी गाथा बतानी पड़ती है, लेकिन कोई ना, ठीक है, विल डू इट आराम से, ठीक है। आई वांट टू रिकॉर्ड अ वीडियो ऑन माय चैनल, ठीक है। um, और मैंने इसका, मैं टाइप कर दूं? थोड़ा धीरे कर तो। भाई रुक जा साले आई नो थोड़ा धीरे कर रहा हूँ मैं, लेकिन um, ये रहा। नहीं, हो गया? नहीं रुक जा। My laptop is steaming. अच्छा क्या How can सर्च I करेंगे, close? टनल। What can I close? I should attend meets from a different one, different device, I think. That यस। would do the trick. I अब never सोच do भाई, that. इतना कुछ मेरे में चल रहा था और उस समय मैं वीडियो कर रहा था रेंडर, इतने गूगल मीट, ओबीएस, आर्क। Script निकालो. हाँ I can still do that, by the way. ठीक है, थम जा तू साले, तेरा अभी गूगल Don't मीट पे question. आवाज, तेरे गूगल मीट पे आवाज लैग कर रही है साले। रुक जा तू पहले थोड़ा, डोंट क्वेश्चन। रुको तब मैं फोन से, तब मैं दूसरे डिवाइस से आता हूँ. नहीं, वो सवाल बाद में कर Why would लेंगे। I add you to stream?
नहीं नहीं, रुक जा, हाँ ठीक है वही जल्दी वही। करो, हाँ। जल्दी करो। माय लैपटॉप वोंट मेक इट, जल्दी करो। रुक जा, हाँ सही बोल रहा है, ठीक है। हाँ अरे ये रहा, आई देख लो। फाउंड इट, आई फाउंड इट, ठीक है। हम्म, आई ऑलरेडी हैव सेट अप द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें ये पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। एंड आई ऑल्सो, कहाँ गया एक्सकैली, हाँ ये रहा ना। इसको, इसकी ब्रांड की, एक तो विमियम थोड़ा वो भाई देता है मेरे स्ट्रीम पे पंगा। गाली मत दे। मेरी रैंडम स्ट्रीम, अच्छा भाई सॉरी। एटलीस्ट मेरी स्ट्रीम पे गाली मत दे भाई। ठीक है ठीक है, लेट्स नॉट डू दैट, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो आई हैव द फॉलोइंग सेटअप, ठीक है। आई हैव माय हम्म, फ्रेंड हु वर्क इन DevOps who नॉट रियली will, डेवऑप्स, आए टेक्निकल चुप कर, रीजंस। हाँ चलेगा। ठीक है, यू वर्क इन DevOps फॉर एज लॉन्ग एज द स्ट्रीम इज कंसर्न, ठीक है। Who will teach आई me डोंट बट ओके, basic आई डोंट बट ओके। DevOps pipelines, ठीक है। दैट आई कैन डू, दैट आई कैन डू। Help me plan the video कॉन्टेंट, slash stream, हाँ ठीक है। देखते हैं पहले से ये कितना समझ स्क्रिप्ट लिख आता के है, दिया तो कितना मैं नहीं सर फोड़ आता। दूँ। ठीक है। I will help you do a stream title, building introduction, 2 to 3 minutes, welcome viewers, etc. Why the setup is valuable for, okay, okay, explain each of your diagrams, okay, Nginx, okay, रुक जा, hold इट्स on. इट्स नॉट अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड, ठीक है। हु विल टीच मी बेसिक डेवऑप्स पाइपलाइन ऑन टॉप ऑफ द सेटअप आई ऑलरेडी हैव, ऑन भाई, टॉप ऑफ द भाई सेटअप आई। मेरे वाले से धुआं निकल रहा है। ठीक है, लेट्स डू दैट। I can't look at your screen share, man. हाँ अच्छा कोई ना, आई विल रीड एवरीथिंग, ठीक है, एंड Just सी। do it. ठीक Screen है, screen share बंद कर दो, then we will do it. Okay. हाँ आई I स्टॉप माय स्क्रीन take शेयर। screen share at least बंद करो. Stop that. नहीं नहीं, एक से रुक जाओ, एक से रुक जाओ। स्क्रीन शेयर बंद कर दे भाई। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर गूगल मीट एंड स्टॉप प्रेजेंटिंग, डन, ठीक है। Thank you so much. And Thank you now so I look much. at the stream back. People can hear me, people can hear you. ठीक है, perfect, ठीक है। तो I'll tell you, इससे क्या Hmm. बोला है, पहले basic introduction of my current setup, brief overview of what the viewers will learn, ठीक है। Mention your Hmm. DevOps friend as a guest expert, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तू है, तेरे को पता नहीं लेकिन तू है। ठीक है, अच्छा। चुपचाप से बैठ। ठीक है, तू DevOps एक्सपर्ट है। uh, ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है। ठीक है। Hmm. देन विल एक्सप्लेन आवर करंट Hmm. फ्लो, जो मैंने अभी देखो समझाया ऑन स्ट्रीम, आई एक्सप्लेन, ठीक है। Hmm. सो वी हैव गुड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक Hmm. है। आई Hmm. टेल यू कि कैसे चल रहा है, ठीक है। आई टेल यू व्हाई आई हैव चोजन Hmm. निक्स ओएस, ठीक है। एंड देन आई टेल यू Hmm. nginx, ठीक है। फिर उसके बाद तेरी बारी आएगी, नाउ आई विल हैंड इट ओवर टू यू टू एक्सप्लेन बेसिक डेवऑप्स फॉर मी, ठीक है। कि मैनुअल, वेर यूल एक्सप्लेन फर्स्ट थिंग कि मैनुअल डिप्लॉयमेंट्स की लिमिट्स क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद उन लिमिट्स को Hmm. सॉल्व कैसे करते हैं डेवऑप्स प्रैक्टिसेस से, ठीक है। एंड देन आई Hmm. विल डिस्कस बेसिकली कि पहले, इससे पहले आई विल बेसिकली टेल कि मेरे को डेवऑप्स क्यों सीखना है, ठीक है। Hmm. ठीक है, ओके ये हो गया। फिर वी हैव द होल सेक्शन, ठीक है। देन तेरी बारी आती है, तो Hmm. अब ये डेवऑप्स कॉन्सेप्ट सिखाता है। अच्छा ये कह रहा है कि पहले मैं ही एक्सप्लेन करूंगी क्या होते हैं, क्या होते हैं शॉर्टकमिंग्स, मेरे को क्यों सीखना है, वो मैं ही एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद तू आएगा, Hmm. ठीक है। देन विल बी द गेस्ट Hmm. एक्सपर्ट सेक्शन, ठीक है। ठीक है। हाँ जरूर, हाँ ठीक है, जिसमें तू जरूर मेरे भाई। को, जिसमें तू मेरे को बेसिक CI/CD के कॉन्सेप्ट बताएगा, क्या होता है CI/CD में, हम्म, ठीक है।
मेरे करंट सेटअप में पाइपलाइन कैसे इंटीग्रेट करनी है वो बताएगा, एंड दिस इज ऑल विदाउट एनी प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है, हम्म, फर्स्ट। ठीक है, देन यू विल टीच मी द कॉमन अच्छा। टूल्स, एंड आई विल टेल यू व्हाई द हम्म, मोस्ट ऑफ द कॉमन टूल्स वोंट वर्क फॉर मी, ठीक है, एंड देन यू हम्म, विल टेल मी बेस्ट प्रैक्टिसेस, एंड देन विल गो ऑन टू द प्रैक्टिकल डेमो, हम्म, ठीक है, हम्म, where you will guide me through what I have to do. मैं इसमें इस मशीन के थ्रू I'll SSH it into my NixOS server and we'll go through हम्म, everything, ठीक है? हम्म, And in the end, वही in the end we'll wrap it all up, ठीक है? ठीक है। Perfect, ठीक है? Just keep asking me questions. That's it. हाँ, ठीक है, Let's go by that. ठीक है. तो अब ठीक है. मैं एक गाना डर बंद करके ये कर रहा हूँ, बाय द वे, याद रखना। हाँ, ठीक गाने है, बंद करके कर रहा हूँ मैं। ठीक है, परफेक्ट. अब भाई गेस्ट एक्सपर्ट बनना है तो थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा तेरे को, है? ठीक है, हाँ भाई जरूर। ठीक है. हाँ। ठीक है, राइट. अब देख, इंट्रो के लिए मैं कुछ लिखवा लेता हूँ, उसके बाद विल गो फ्री. फ्री, ठीक है. इंट्रो के लिए हम्म, मेक अ राइट अप और समथिंग सो दैट हम्म। इट्स इजियर. ठीक है. इंट्रो पे आई विल पुट माय I will वेबसाइट. do the intro, man. You don't. I will do it, man. Intro. Wait. तू करेगा? I can do that. It's not like rocket science. ऐसा कर, पहले तू इंट्रो कर You अपने. know me. वी कैन अपलोड इट ऑन बोथ द चैनल्स एक्चुअली इफ यू वांट टू. ठीक है भाई। ठीक है. तू ठीक अपना है। एडिट कर, पहले तू अपना इंट्रो कर, उसके बाद मैं अपना इंट्रो करूंगा. तो अपना इंट्रो हम्म, अभी अभी प्रिपेयर कर ले. आई डोंट थिंक तेरे को लिखने की भी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, मेरे को लिखने की जरूरत हाँ। पड़ेगी. ठीक है. राइट बेसिक इंट्रो इन सिंपल इंग्लिश फॉर मी एंड साउंड Who is going to लाइक. share the screen? अच्छा मैं दूसरा दोनों दूसरा अपने एंड पे स्क्रीन पॉडकास्ट शेयर कर कर रहे हैं, सकता हूँ। दोनों अपने एंड पे स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. ठीक है. आई शेयर अच्छा माई ठीक है। स्क्रीन अगेन एक्चुअली, वरना तेरे को दिखेगा नहीं, तो अपने स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन नहीं दिखा पाएगा, है ना? हाँ मैं एक काम करता हूँ, आई एम स्विचिंग ऑफ माई स्क्रीन शेयर एंड मैं अपन दोनों को ना वो कर रहा हूँ, मतलब ये वाला जो विंडो है, आई एम जस्ट उसी को एक्सपेंडिंग दिखा इट देगा फॉर द पूरे को. टॉपिक। हाँ, उसी को दिखा देगा पूरे में. हाँ हाँ, वही दिखा परफेक्ट. रहा हूँ। ठीक है. साउंड लाइक अ नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन. ठीक है. इसे बोलना पड़ता है भाई, नहीं तो ये शब्द घुसाने चालू कर देता है नीच साउंड करने के लिए. हैशटैग है, हैशटैग पे बुलवा रहा है। अब देख, ठीक है. एक बारी मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है, एंड यू टेल मी हाउ दिस साउंड्स. कुछ वो है तो विल सी. हम्म, ठीक है. हम्म, ठीक है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हम्म, माय चैनल. ठीक है. टुडे इज गोइंग टू बी टुडेस वीडियो इज हम्म, गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट एंड ऑनेस्टली आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट. ठीक है. सो यू नो आई हैव बीन हम्म, रनिंग माय होम सर्वर सेटअप फॉर अ व्हाइल नाउ. यू प्रोबब्ली सीन माय प्रीवियस वीडियोस. ओह माय गॉड, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ नहीं करा है. ठीक है. ठीक है. तो हम्म, if you are following my stream, you will know that I have set up my home server on my NixOS laptop हम्म, recently. ठीक है. Where to हम्म, overcome the my ISP, which is Airtel. It has CG net issues. To overcome those issues, I've used the हम्म, Cloudflare tunnels to route all the traffic into my laptop so that her sites can be hosted. ठीक है. Now, हम्म, but now updating the site every time when I make updates to the code is very hassle. Is a very what क्या adjective होगा? Hassleful. What adjective should I use here? It's a very tedious task. ठीक है. intimidating and tedious, Let's go with tedious and intimidating. time ठीक है. consuming, हाँ, let's go with time tedious. हाँ, let's go with time consuming. ठीक है. It's a very time consuming and tedious consuming. task. ठीक है. And I think there ठीक है। has to be a better way. So I contacted my friend who is a DevOps engineer. ठीक है. He has. फ्रेंड, नहीं नहीं, आगे आगे कुछ कुछ नहीं हो भाई, मैं फ्रेंड खत्म उस पर, उससे ठीक है. आगे नहीं भाई, Who प्लीज, is a फॉर DevOps लीगल expert. रीजंस। ठीक है. Who is a DevOps expert. नहीं, no expert, no expert, no nothing. I contacted my friend who knows his shit. That's it. चलो ठीक है. ओके, ठीक है. ठीक है.
तेरा intro है, let's go with that. ठीक है? So lucky for me and you, I've got a friend who knows all this shit about DevOps, and he is going to teach me today about all of it. ठीक है? So I'll introduce my whole setup to him and you guys, and then he will tell me what is lacking and how I can add more things to it. A small disclaimer, normal GitHub actions won't work because you cannot SSH into my system using normal methods because Airtel has a NAT layer and my IP is not publicly accessible. My local network is not publicly accessible. So let's get started. ठीक है? इस पूरे टाइम पे मेरे बैकग्राउंड में मॉर्फो हब वाली मेरी वेबसाइट होगी. ठीक है? Hmm. And when I go let's get started, I will switch to Excalibur and Hmm. I will switch to Excalibur Hmm. and I'll explain my whole setup. ठीक है? I'll invite Hmm. नहीं पहले I'll invite you onto the stream, then I'll explain the whole setup to you and the stream. ठीक है? एक And सेकंड दो, एक सेकंड दो, आई एम चेकिंग समथिंग, जस्ट एक सेकंड. हाँ हाँ. A small disclaimer, normal GitHub actions won't work because you cannot SSH into my setup. ठीक है? I'll invite नहीं पहले I'll invite. हाँ ठीक है, डन. मैं ठीक है. स्ट्रीम क्वालिटी चेक कर रहा था. ओके परफेक्ट. ठीक है. तो हाँ तो उसके बाद I'll invite you. ठीक है? You'll give your introduction जैसे भी तेरे को लगेगा. ठीक है? I'll leave the floor to you. You'll give your introduction जैसे भी तेरे को ठीक लगेगा और ठीक से दियो. ठीक है? थोड़ा अपनी position yourself as an expert. ठीक है? I will suggest that बाकी तेरे ऊपर है. ठीक है? ठीक है? Position yourself as an expert and then we'll रीटेक move. कर लेंगे, ठीक से नहीं हुआ तो रीटेक कर लेंगे, ठीक है? हाँ वो अपना इंट्रो दे लो, क्रॉप क्रॉप खेलते रहना बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ. ठीक है. और वो क्रॉपिंग में स्ट्रीम के बात करूंगा बहुत स्लो हो जाता है भाई. ठीक है. ओके. हाँ. अरे मैंने भाई सॉरी. लेट्स नॉट स्वेयर ऑन द स्ट्रीम. गेस्ट आ रखे हैं. ठीक है. लेट्स नॉट सर्व ऑन माय स्ट्रीम, यू कैन डू एनीथिंग ऑन योर स्ट्रीम. हाँ भाई भाई वही मैंने बोला लेट्स नॉट स्वेयर गेस्ट आ रखे हैं. ठीक है. um, ठीक है. तो दैट्स इट. एंड उसके बाद तेरे को तू अपना इंट्रो देगा उसके बाद मैं अपना सेटअप एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. And first thing you will do is you will not show any code or how I'll do shit. You तो पहले explain करेगा कैसे usually companies में होता है. And then we'll go on to my setup specifics. ठीक है. So I would suggest तू एक आध pages या कुछ diagrams खोल के रख ले. किस चीज का? कुछ links मेरे को भेज दे एटलीस्ट कुछ diagram हो मेरे पास CICD. ठीक है. अच्छा वो मैं So भेज that रहा I हूँ, can एक सेकंड yeah दो, I मैं can भेज रहा pull हूँ. them up. हाँ. ये सब खोल के रखते हैं ना पहले streams मतलब भेज रहा हूँ, एक recording से सेकंड. पहले से. हाँ. हाँ हाँ, मैं खोल ही रहा हूँ. I am sending you one on stream chat, okay? ये Google Meet का chat. हाँ कहीं भेज दे. हाँ, because अगर खुला इस पे अब. Send me a few shit. ठीक है. CICD diagram. This is a small template you can use, maybe. No, why use a template? We can just go with the picture. Let's not do anything that's an overkill, very honestly. भाई. Hmm.
And overkill is not required in any case. क्योंकि मैंने मैंने अपने गिटहब रिपोजिटरी पे प्रोडक्शन ब्रांच एक बना दिया है ऑलरेडी। Hmm. Actually, you can pull up any image. I'm not sharing because like वो ना share हो नहीं रहा ठीक से. हाँ हाँ, कोई ना, यू ठीक है. सेंड मी द लिंक्स। Image. I will, नहीं नहीं मैं वही बोल रहा हूँ. I will tell you what to Google and images खोलना है. It's not like I'll be getting into like I will be getting into tools also. But diagrams उतने नहीं चाहिए मेरे को एक diagram के अलावा. तो तू वो उसका लिंक मेरे को अभी बता देना, मैं अभी खोल लेता हूँ पहले ही, इज व्हाट आई एम सेइंग। CICD Google screen share करो. तू ऐसे ही बता दे। CICD pipelines. सी आई सी डी पाइपलाइन, अच्छा सी आई सी डी पाइप। CICD pipeline diagram. अच्छा हाँ, स्क्रीन तो शेयर करनी पड़ेगी मेरे को, रुक जा। आई शेयर माय स्क्रीन विद यू। ठीक है। I'll- Hmm. Okay. Uh, Let me see. Open that one which has two circles. ये वाला, Third, fourth column. ये वाला। 3R4C. 3R4C. अच्छा, थ्री आर फोर सी, ये वाला। Three. हाँ. Size I'll it. open this in mute। अच्छा, हाँ. इसको खोल लूँ? Just open that and mute that. That's it. अच्छा, ठीक है, हाँ. खोल लिया है, ठीक है। Hmm. जेंकिंस भी, मैं जेंकिंस भी पढ़ रहा था ना आज। ऑलमोस्ट 3 घंटे की स्ट्रीम करी थी मैंने दोपहर के टाइम पे। Jenkins, it's like you just install it and just use it. That's fine. हाँ ठीक है, कोई ना। Actually, you can go for like complicated setups like Argo. एक सेकंड ये कौन सा Jenkins है? एक्सकेलिडर है ना ये? नहीं वो Jenkins अभी खुल रहा था वो खोलो. वो प्लगइन्स का होता है इसका पेज, जेंकिंस का। Jenkins का प्लगइन का पेज ऐसा सबसे दिखने लगा. ये कब हुआ? जब भी हुआ छोड़ो. ठीक है चलो चलो. Let's start ठीक है, and we will make this quick. हाँ. लेट्स मेक दिस क्विक, आई जिन ओपन दिस पार्ट्स में हैंड। लैग होगा ना बहुत ज्यादा. जिन हाँ, पार्ट्स में ज्यादा लैग होगा ना वो पार्ट्स काट ही देना सीधा. There's नो no point of वरीज, having those parts. नो वरीज, ठीक है। हाँ. आई ओपन ओबीएस स्टूडियो। Yeah. अच्छा, वेट, आई क्रॉप यू। मैं तू थोड़ा अजीब सा हो रहा है इसमें। आई क्रॉप यू करेक्टली। भाई हेलो, चालू कर दो. हल्का सा, अरे भाई बस रुक जा यार। अब इतनी तैयारी करिए तो थोड़ी सी और कर लेते हैं बस। ठीक है। ठीक है. I have been streaming. This is my third hour of streaming, I think. नाइस। I have been streaming since wait, second. Going to complete 2 hours. ठीक है, Hmm. ओके, लेट्स, I'll add a marker on my stream। ठीक है, ऐड स्ट्रीम मार्कर। Hmm. इसको कॉपी करो। तू दिखना बंद हो गया मेरी स्ट्रीम पे, अब दिख रहा है तू। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। मैं स्ट्रीम अपनी वाली बंद कर रहा हूँ. चलेगा। मतलब मैं तो आपके वाले पे हूँ ही है. It's like मेरे वाले पे मेरे को जितना करना था हो ही गया है. उसके बाद हाँ अगर कुछ करूँगा तो डाल दूंगा. ठीक है, रुको. परफेक्ट। रुको भाई. मैं स्टॉप रुका हूँ। स्ट्रीमिंग. मैं अपनी स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ. एंड स्ट्रीम. एंड. 2 मिनट दो बस स्ट्रीम बंद हो रही है. हाँ, ओके. 2 घंटे की स्ट्रीम. नाइस.
Oh, that's good enough. मतलब 2 घंटे मैंने बैठ के पढ़ाई तो की है that much I know at least. भाई एग्जैक्टली हाँ, यू कैन एग्जैक्टली मेजर एंड रिकॉर्ड थ्रू आउट द डेज कितना काम किया है हमने. और एंड एंड आई एम डूइंग इट इन अ वे दैट आई एम टीचिंग माई सेल्फ, तो अगर मेरे को कभी किसी चीज में डाउट हुआ, आई वॉच माई स्ट्रीम ओनली. नाइस. 200 IQ move. This is called a 200 IQ move. यप. Quite literally. ठीक Let है, me सो just exit OBS also. अब तो आपकी स्ट्रीम पे हो. हाँ कर ले. उसके बाद आई हाइड यू. हम्म. तेरी आवाज स्ट्रीम पे नहीं आएगी. हम्म. ठीक है, आई हम्म. कम इन, आई इंट्रोड्यूस एंड देन विल स्टार्ट. ठीक है. गूगल मीट से निकल गया क्या ये? ओके, ही हैज लेफ्ट द गूगल मीट. इसने सब बंद कर दिया है लग रहा है. ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये. ओके. यप. मैसेज आया इसका. अपॉलजीज कमिंग बैक 2 minutes. ओके, वी कैन वेट 2 minutes. बैक. Sorry. एक सेकंड. हेलो. हेलो. हाँ सॉरी. हाँ अब करता हूँ. ठीक है. ठीक है. I हम्म. am hiding you on OBS. I'm pulling the script up. ठीक है. ठीक ठीक है. I'm hiding you. I am putting a marker here and then I'll start. ठीक है. Okay. I'm putting a marker here. ठीक है. ठीक है. 3, 2, 1. Let's go. Okay. Hello. Welcome to my channel. And today we will be learning about DevOps. Now, DevOps, you might ask, right? So if you have been following my past couple of streams, you will know that I have deployed a lot of shit on my. अरे यार इस ऐसी की तैसी. You are visible. रुक जाओ. ठीक है. Let's go again. कोई ना. हक भी दिया था मैंने थोड़ा. ठीक है.
Okay, let's do it again. One, two, three. Hello everyone, welcome back to my channel. Today's video is going to be a bit different, and honestly, I'm pretty excited about it. So I've been running my home server setup, which I set up all on live stream. If you have been following my past few lives, so but and what it does is it takes all the requests coming from the internet and transfers it to my laptop, which is running NixOS, so that I can host all my websites, no matter how heavy, on that laptop, on that device. So as you can see, this website is being hosted on this laptop, and any changes I make here will be reflected online. But the hard part is that it gets very tedious to test all new changes. If anything is breaking, if any fonts are not loading, to deploy things again and again. Because if you know, I code and develop things on this system, and I want the changes reflected on the server. So all of this is called DevOps, but I know almost nothing about it. But luckily for me and for you guys, I have a friend who knows about this topic, and I have convinced him to come here and teach me and you all about DevOps. So I'll invite my friend Siddharth on stream, aka Sid. Yes, Sid, you're now visible. Hello, hello. Test kar lo audio. Everyone, hey everyone. So my name's Siddharth, and I currently work as a dev with a organization. So I am here to steer through his problems and whatever he's facing when it comes to automatic deployments or anything. So we are good to go. What exactly you are implementing and what exactly are you facing? Okay. So I'll pull up Excalibur. I've already prepared a diagram here. Okay. Okay. So I'll first put a disclaimer that my internet service provider, which is Airtel, has put a CG NAT layer around my internet, so my local network is not publicly accessible. So people can't put requests directly from the internet to my devices. To circumvent that, I have used the Cloudflare tunneling system, which I'm about to explain. Okay. So currently, this all has been set up on my Nix laptop and is ready to go. As you saw the website, it's running from my NixOS laptop. Okay. So first, any request comes from the internet, it goes to the Cloudflare DNS where I've registered. The Cloudflare DNS forwards that request to the tunnel, which is running on the home server laptop. All the requests are forwarded to Nginx, which handles requests and transfers it to the app which is required. So if I just write morphotech.xyz, it will open the main page. If I write charts.morphotech.xyz, it will open the charting page. And all of them can be deployed as separate applications. What I need right now is a good pipeline so that it's easier for me to add new changes and record what is happening and check the logs. So that is and what all normal companies do, so that it's easier for me to maintain all of this infrastructure because it's getting very tedious. Even it's my second or third day. So is the Okay. system clear? So okay. So I do have actually we have been doing this together only, so I don't know what you are trying to achieve here. Okay. So shall we jump into how exactly the thing that you're trying to, you know, implement works? No, I Shall we am jump in? no. So you teach me how things usually work, what is DevOps, what is CI/CD, and then we'll jump into my setups specifics because I know very little Okay. about it despite my research. Okay. So when it comes to see, when we say Acha, okay, thank you for this diagram. Huh. Okay, so this is
sample CI/CD pipeline. Okay, like this is the bare bones. Okay, and depending on how exactly do you plan to manage your deployments, you can configure this. Okay, but 99% cases, I think it is just this only. Okay, but in real life scenarios, there are different environments as well that come into play in between. I will go over that. Okay, so first of all, why exactly do we need this? Okay, so when you think about it, like if you are making changes to your code base, okay, now right now you're working alone on your code base, but imagine 10 people working on your code base, okay, Mm, and every time someone makes a change on some branch or something, okay, and then imagine every time you have to manually build your app, okay, like every time that person has to build their app and then they have to push it, and if something breaks then they are responsible, and it like distributes the responsibility over everyone, okay, that you have to see everything and all of and it, yeah, and that okay. never works. That So never a way works. to go about it is automating the whole process, okay. Like suppose you are working on a repo, let's go with the plan part, okay. We are Okay. working with a repo, and we have three branches, like a main, a Marvin, and a Siddharth branch, all three. Okay. Okay. Whatever we are doing on our own branches, okay. Right. This is an example where I'm not including any sort of, environments, specific environments. Otherwise, this becomes a multi-chain. Okay, this is just linear. And for the Let's go scope with of simple. to achieve, this is fine. Okay. Hmm. It's just that when extra environments are added, okay, there are more branches that converge based on your requirements. Okay, so suppose we have to plan. Okay, we have two people, Marvin and Sid. Okay, so we have two branches, Marv and Sid, and we have our main branch. Okay, so whatever we do, okay, we commit to our own branches, and before merging it to main, it goes through this. Okay. Okay, suppose we don't want to make it hectic for ourselves that we are pushing code and every time it going into build and all of that. We just need to push our code. Okay, run some tests on them locally. Okay, Right. like a very bare bone setup we are talking about. Hmm. Okay, a huge setup has a lot of moving parts. Okay, but I'm trying to go over the philosophy behind it, that how Hmm. exactly things need to be achieved. So we have planned that okay, both of us have our branches. You Hmm. commit, I commit, or and then when we merge to main, okay, Right. when we merge to main, okay, we expect that the build is automatic. Hmm. ठीक That है. on my end, if I am making things perfect, that okay, everything works here. Okay, that is why I'm merging it to main. Hmm. Okay, now that goes into build automatically. Hmm. I Got it? understand. ठीक है. हाँ. Now I don't have to contact you, कि Marvin, I need GitHub credentials or something like Marvin merge my PR or anything. It's just that once that is done, Hmm. you see some changes, and once that is done, then it goes into build stage. Okay. Right. Now you have a new build of the what is it called? Application with you. Yes. Now comes testing. ठीक है. Now the test part is important. Like no matter how many people are involved, or like in huge setups, that is a separate environment of its own. Hmm. Okay. Why is it important that if we miss something, okay, we need some room to reroll. We don't want it to, be deployed and then face downtime or anything. Broken. Yeah. We don't want Yeah. a So broken in thing to this deploy. case, we can like run some set of tests. Okay, fine. ये सब चल रहा था, app चल रहा होगा. We can do that. Hmm. Okay, we can Right. do that and then push it to the next stage, Right. Okay. and then it is finally deployed. Now, ठीक है. in all of this, the हाँ. only manual intervention that someone had to do was accept my pull request, And everything happens automatic after that. and everything else happens automatically. Even if the merge fails some tests or something, okay, we have implemented our own logic that you have to do a reroll. Ki, okay, let's not merge this. This is problematic, ठीक है. and fix it or something. Okay, you can implement all of that.
ठीक है. So, you know how exactly your code reaches from your local host? I keep saying local host, let's say from your personal laptop to your production environment. Mm-hmm. Whatever checks, whatever checks, whatever tests, whatever uh, environments, whatever manual interventions, even in specific environments you want, all of that you can control automatically. Okay. And if it becomes, you know, when a single person is doing everything, that is completely fine. Okay, Mm-hmm. but even if you're doing it like on your own only, Huh. even after then, like this would save you a lot of time. Okay. Yeah, So, because you don't have to do anything manually. You just right. push and then forget. Right. Okay. If things go bad, it would come back, and if they work, it will be pushed and it would be on your production environment. Okay. So that is why we use it. Now ठीक. comes, given your flow, what exactly you want. Okay. So right now you're maintaining your code on GitHub, right? हाँ, एक सेकंड I'll explain, ठीक है, what I want, Hmm. जितना मेरे को समझ आया, and I'll ask some questions and you tell me if I am Hmm. thinking in the right direction or not, ठीक है. Okay, sure. So currently I am the only one working, ठीक है, Got it. and I on my GitHub I have a dev environment. I'll show you. Wait, not a dev environment. I meant on my GitHub I have two branches. Okay. Uh, Let me open this. ठीक है. There is a main branch and then there's a production branch. Got Okay. it. Look at this. ठीक है. Hmm. And so what I want is कि मैं main पे अपना code करता रहूँ. And as soon as I go to the production, as soon as I merge changes into the production branch, everything starts. So my thing is more of continuous delivery, right? मेरा continuous integration is not that much because um, I am the only one integrating things, I think. Hmm. है ना? So my thing would be a continuous delivery system that detects when changes occur and Hmm. automatically builds, tests, and releases things, right? Hmm. So instead of two loops, I would have one big loop, I think. Hmm. ठीक है? So, And less steps. huh? And lesser steps. And lesser steps, yes. You don't Not have the just, plan, yeah, you don't have the plan one, you don't have the operate one. yeah. That is that's because that is done, not because that is not required. That's because that is done. Okay. So what exactly are you planning to do to Huh. achieve that? So what my plan is कि I learned about GitHub webhooks. ठीक है? Okay. So what I'm planning to do is I'll push changes to the production branch, Mm-hmm. and as soon as I do that, a webhook triggers and it sends a request to my server through all of this, right? I'll make a DevOps pipeline thing here Mm-hmm. so that let's say I go devops.morphotech.xyz or something like that, है ना? Which won't be Mm-hmm. public, and I'll add a password to that, ठीक है? ताकि कोई भी ना request भेज पाए, Okay. ठीक है? And as soon as that request is received by my server, it will check कोई कुछ नया आया है, hash it will check the hash of the GitHub thing. If it's changed, it will rebuild and redeploy. Mm-hmm. ठीक है? And उसका सारा nitty-gritties and things so that there is no downtime is what I want to learn. Hmm. Okay. So there are two ways to go about it. One is like very bare bones, Right. and one is the official answer. So what do you Okay. want? So The what I want Mhm. is to you can tell me the proper answer and then I Hmm. can eliminate what I don't need or what I feel like is too complicated for me myself. ठीक है? Let's go with the full-fledged answer. Explained, that can be simpler because you don't have a server pool, Yeah, I don't have a server pool. a server, Yes, I have a right? single server. Yes. You single server. Okay. Now, as I said, the tools don't matter, the philosophy does, right? You just want key it periodically checks.
periodically checks if there are changes to production. Right. If there are, it does things and then push and Yes. then deploys. That is your goal, right? Yes, exactly. And I'm putting so much stress on the word periodically because you can just configure a cron tab which checks your production branch. Huh. Okay. And whatever existing scripts that you have in place, Huh. you don't even need to do anything on your server. Okay, just uh, how do I explain? So, how exactly you are building this? This is just an npm run and or नहीं तो npm build and then push. so that is also the thing. ठीक है, I am very new to this. ठीक है. So Ah, what no worries. I'll access it into the server and I'll show you the exact config right Yeah, now. yeah, that would be really nice. हाँ. Is it ठीक है. possible that I can SSH you into your server? You can't access it into my server. Acha, I okay, just explained. हाँ. okay. SSH into it. ठीक है. So I'll Hmm. clear all of this and I'll SSH into my server. Acha, this is on your local environment. Okay, got it. Yes, yes. 192.168, got it. हाँ. Okay. Uh, Show me how exactly the build works. Like, हाँ, वही I'm showing it to you. So I go three and then let's do a bat on the file now. Config and then I'll go to config services and I'll go to my main site service. ठीक है? Because Nginx and everything is configured, I'll show you the Nginx first. ठीक है? Let's go and just one by. I have an idea. Like, it isn't required. That's fine. Let's go to like how exactly you're handling the build. It's very bad, Avi. You will see. This is all I have in the code, Avi. Working directory is this. Exec start is this. Okay, but next you are using to build, right? Yeah. Restart always and environment this. This does So not what? build. This just serves. It assumes that build is already done. How exactly do you do your deployment? Just show me that. Or the I'll show chain you. of ठीक command है? videos. I'll do CD, I'll go into my codes, I'll go into MorphoTech, ठीक है, I'll do bun run build, and then I restart my laptop and it restarts the server. I do just, yeah, it's pretty Yeah, bad. we can't do a cron job. Yeah. We can't do a cron job if the server that you are putting it on needs a restart every time a build No, is no, I don't done. think it needs a restart. I just need, because this is a Nix config, it needs a Nix rebuild, which is, which I think it's pretty bad. हर बारी Why is that like you can do without main site.nix? Now that if you suppose if you are doing that nix, sorry, Oh, नहीं नहीं, you I don't think it needs a rebuild. It just needs a system CTL restart, है ना? Because look at this. If I go to my services, so there is a services dot, yeah, look at this, na? There is a main site dot service. I can just restart this and this can will, do that. Why would you restart your computer? I don't know what I'm doing mostly. Abhi just start here. Yeah, So I am that's, telling you, okay, what you can do right now, you are on the production branch. yes, I'm on the production branch and there are some changes which are not built and deployed. And hold Check on, for I new. also have a script. Wait, hold on. I also have a script here. This works. ठीक है? So, I have made basic checks, okay, and I'm using instead of Git, I'm using GH, which is the GitHub CLI Okay, because okay. it's a private repository and otherwise I'll have to generate an SSH key and then store it. Nah, that would be So very I problematic. just use Fine. GH auth login and just so wait, I don't think this is updated to the GH version. Yeah, this is still on the Git version. I have to update it to the GH version. ठीक है? So only this thing changes, right? This fetch changes, right? GH fetch हो जाएगा. हाँ.
And okay, then we check the hash. ठीक है? Then we install the dependencies again. We build the application. We stop the service, right? System CTL se, and then we start it back again. Hmm. And then in the end, we check if the service is running properly or not. ठीक है? We log both the things, and then we close it. Close the script. You just need to put this on a cron job and your job would be done. That's it. I don't even need a cron job. I I am trying to do it through the webhook, na? Why? Why? Because I want to keep the system as light, na? Like cron job हर 5 मिनट में चलाना, I don't know. I don't want to do that. Cron job is nice, but it's not, I don't want that. It's periodic and it's unnecessary checking each 5 minutes. I want ki Make it instead an of, hour then. huh? Make it an hour. Make it. See, it's about added like if you want a UI for everything that you press build and everything is done, there is a way of doing that, obviously. No, 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 not But UI. Just जो webhook वाला है, I'll show you ना. Because there are GitHub webhooks, right? Which I can make a webhook and connect this to an API. So basically, I'll create an API using Go or Python, which will execute the script. hmm, और ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी वेबहुक पे जैसे ट्रिगर आएगा ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी है ना तो व्हाट आई वांट इज कि ये लॉग्स जो है ये प्रॉपरली स्टोर हो ठीक है एंड इनमें कोड हो एक ताकि आई कैन सी कितना एरर आ रहा है कहाँ एरर आ रहा है ना hmm, एंड आई हैव समथिंग लाइक अ डैशबोर्ड और समथिंग विद यूजिंग सम टूल hmm. है ना कि You wait. You have that line now, like for comparing hashes, हाँ हाँ आई हैव इट and if you are only executing a pull or anything when the hash is outdated, right? यस Whenever there's a new hash, then only you are doing like everything. हाँ हाँ So essentially, what your cron job would be doing is like every 5 minutes or 10 minutes, हाँ it would just check कि मतलब okay, new changes are there, new changes are not there, and continue about it from there. नहीं I get that but why But you even want check immediate. हाँ I just want the Okay, webhooks then method also done. because वो पसंद आ गया है मेरे को है ना Okay, yeah. Then jump to let's jump to webhooks then directly. नहीं webhooks I know webhooks वाला part is I'm fine Okay. with what I want is this setup like it does this work and इसमें logging वगैरह का setup कैसे होगा what if something fails और what if I don't like जब तक नया वाला build हो रहा है मतलब व्हाट हैपेंस इफ इसमें अगर रीस्टार्ट नहीं मतलब अगर सर्विस में कहीं एरर आ गया सो हाउ डू Hmm. आई रिवर्ट बैक टू द ओल्ड चेंजेस I get your point. I get your point. Okay, then you can use it. See, there are two ways again. Either you can like have a list of things that you want and implement all of them, or you can just use Jenkins and call it a day. How about how do you want to go about it? लेट्स डू द जेंकिंस मेथड ठीक है एंड आई विल सी अगर इफ मेरे को उसमें से कोई पार्ट खुद से करना होगा तो विल सी यू टीच मी थ्रू जेंकिंस ओनली Okay. Okay. So where are you installing it on your server or like on the laptop you are on right now? आई विल इंस्टॉल इट ऑन द सर्वर Okay. But you won't have the UI here, no? अच्छा It has a script console as well, but I'm not comfortable using it. The UI is nicer for Jenkins. नो नो सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जेंकिंस का यूआई विल बी ऑन द सर्वर लैपटॉप ना is what you're saying and through the Jenkins you server can install on your own laptop and do the same thing, by the way. तो फिर सर्वर पे चेंजेस कैसे जाएंगे अगर if it's on my this if it's on this laptop
server पे you were going to write an API, no? Anyway, तो to जेंकिंस क्या trigger. करेगा उसमें, जेंकिंस क्या करेगा उसमें फिर? The read from the webhook and then pass to this. You wanted Jenkins, otherwise you can just make changes to your API also. हाँ, because I also have the API code prepared, जिसमें there is an Hmm. endpoint which receives a request Hmm. and calls the script, है ना? Wait, I'll let's go back to, oh no, ये गलत ब्राउजर खोल लिया है मैंने. Hold on. Actually, given that you just have a single server, you just want to check कि मतलब if the hash has changed or not, right? You can. I'll show you मेरे दिमाग में क्या है, ठीक है? What I'm aiming Okay. for, ठीक है? ठीक है, I'm aiming for a Vercel type thing, if I'm being totally honest. ठीक है? Hmm. So if I log in here, मेरे GitHub से log in हो जाएगा Vercel, ठीक है? Hmm. हाँ, so look at this, ठीक है? If I go Hmm. to here, ठीक है? Hmm. यहाँ पे I go to deployments, and Hmm. as soon as I push any change, it starts Hmm. to rebuild, ठीक है? And if the rebuild अच्छा, you want fails, right? है ना? And if the rebuild fails, it will send me an email, and the old thing won't get changed even a little bit. You can achieve this using Jenkins. Okay, how? What do I need Install to it on know? your server. Install it on your server first thing. Wait, I'll write down shit, ना? ठीक है. Write it down and we can do that on us on another day separately because like we discussed like what we need. हाँ. Okay. Install Jenkins on server. Okay. Lay out the script for how to handle the deployment. Rebuild and deploy script, ठीक है. Huh. Okay. Integrate GitHub webhook. Okay. Yeah, that's it. Actually, it's not that complicated. Okay. I am actually sending you a video on how to do it as well so that we can do that on our next call. Okay. Okay. Wait a second, I'm sending it to you. Google Meet पे भेज रहा है? Yeah, I will just send it to you on Google Meet. You can watch it whenever you want. Hmm. Okay. And let's implement this on next call. It's 11:30, so Oh shit. Yeah. ठीक है. tomorrow's a Monday. Oh yeah. Tomorrow is a Monday. Yes. Okay. Perfect. Okay, let's do a part two. We would be doing this. ठीक है. Let's end it here. I think I understand what all of this is. ठीक है. Installation. Why? Yes. You don't need all of it. Just search if there is a Nix package for this. हाँ, there is. Search next package. Jenkins. There most definitely is one. There has to be, I mean. Oh, Yeah. yeah, yeah, done. So installation is a no-brainer. Yep. There is a Emacs package for Jenkins? What? What? What is this even?
Okay, no, sorry. Sorry for getting Yeah. distracted. So Yes, let's not get let's call distracted. it a day. Yes. Now that we have what we want, let's call it a day. Okay. Okay, so I'll do Okay. the ending thing. Okay. Okay. Hmm. So thank you. Okay. I think I have a better idea of what to do and the tools that will be required. You'll send me a video. I'll also watch. Acha, you send me a video. I'll also watch it on myself by myself and see what all can be done. Okay, yeah. इतना Okay. तो हाँ तो let's end it here. ठीक है ठीक है You're so going to edit here. हाँ I think so You're I'll going edit to render. this. हाँ आप वीडियो रेंडर करने जा रहे हो क्या? अब मतलब और बचा ही क्या है अब वीडियो वीडियो करते हैं रेंडर. हाँ ठीक है. अरे भाई द वे YTDL पे काम नहीं कर रहा है. क्या हो गया YTDLP को. इट सेज कि मतलब तुमको ये करना पड़ेगा. गिटहब वो यूट्यूब पे वो करना पड़ेगा लॉगिन. कैप्चा. क्या करना पड़ेगा. कैप्चा सॉल्व करना पड़ेगा. ओह वाओ. But there should be something. I don't know. Like We YouTube just has need to gone crazy. wait. इन्होंने लास्ट टाइम भी यूट्यूब ने ट्राई किया था यार ये सब. Actually, I can do the same download from NVIDIA's as well. So really, it doesn't matter. वही we don't need to. I'm checking We, if I can find myself on NVIDIA's. वैसे I only need to download my own videos or my own streams or anything. So it really doesn't matter. Okay, share a भाई screen. this is lagging. This is lagging more. What? Why? लाइव The स्ट्रीम आप बंद कर दो ना. लाइव स्ट्रीम पे वीडियो एडिट करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं लाइव स्ट्रीम तो बंद कर रहा हूँ मैं. इस पे क्या क्या है. अच्छा हाँ लाइव स्ट्रीम बंद कर देते हैं ठीक है. आई लो अरे अच्छा ओके सो आई थिंक दैट्स इट. अब मैं जा रहा हूँ इसको एडिट करने. सो बाय बाय एंड विल मीट टुमारो probably.